Good morning, students. I hope you all are doing well at your places, and today we'll be studying about letter writing. So let's just begin. Title of our chapter is letter writing, right? You have already learned that how to write friendly letters in the previous classes. Now let's just have a quick revision. देखिए हम quick revision करेंगे. Letters basically there are of two types, informal and formal. Formal letters जो होते हैं they are written to authorities, to the principals, to some organization, etc. Whereas informal letters they are written to siblings, relative, friends, right? So first we'll be studying about informal letters. देखिए एक misunderstanding has caused बीच में हो चुकी है. It has caused a close friends to be annoyed with you कि वो आपसे गुस्सा हो गया. You just have to write a letter to your cousin explaining the incident and of course requesting him or her to clear the matter की help to clear the matter की चीजें solve हो जाएं. देखिए एड्रेस आ गया आदित्य एनक्लेव, इट्स इन हरिद्वार एंड ऑफ कोर्स आप डेट लिखेंगे डियर भूमि, राइट. आई नीड योर हेल्प वेरी बैडली, मुझे आपकी बहुत अर्जेंटली हेल्प चाहिए. लास्ट वीक अ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज कॉज्ड बिटवीन मी, मैं मेरे बीच में और शिवी के बीच में. यू नो दैट what a dear and a close friend she has been for me for the last 5 years से हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं and I do not want any confusion, any chaos between both of us. It happened like this that a trip to Manali, हमने ट्रिप अरेंज किया था by our school and only 15 girls they were to be selected on a first come की सेलेक्ट होनी थी. मतलब 15 बच्चे गए ट्रिप पे फर्स्ट सर्व बेस, राइट. शिवी एंड आई रश टू स्कूल, हम लोग स्कूल गए सो दैट वी कैन सबमिट आवर नेम्स, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत लेट हो गए थे. आवर पेरेंट्स हैज टेकन द होल डे कि हम उनको मना पाए टू मेक अप देयर माइंड्स एंड ऑल द 15 सीट सब लोग सब चीज़ें बुक हो गई. यू कैन इमेजिन हमको कितना डिसअपॉइंट हुआ. The tour was to begin. It was to begin on Wednesday, that is 2nd February. On 1st February में I went with my mother to school. मैं school गया so that to buy a sports shirt कि मैं shirt ले लूँ. We found पूजा हमारी क्लासमेट हैं और आर मदर जो है शी लुक टू क्वाइट एंड वरीड, वो बहुत ज़्यादा वरीड लग रही थी. एंड पूजा की फैमिली जो वांटेड मी टू ड्रॉप टू दी ट्रिप कि वो ट्रिप पे जाएं. बिफोर आई कुड से एनीथिंग, मैं कुछ भी कहूँ, माई फादर, मेरे जो मदर है शी हैज सजेस्टेड दैट आई शुड टेक पूजा की प्लेस ले लूँ एंड द प्रिंसिपल एग्रीड, और प्रिंसिपल इस बात से एग्री कर ली. देन ऑन रिटर्निंग होम आई केप्ट रिंगिंग शिवी बट शी वॉज आउट फॉर द होल डे, वो पूरा दिन अपने घर से बाहर थी, राइट. एंड नाउ शी फील्स दैट आई हैव बीट्रेड हर कि मैंने उसको धोखा दे दिया है बाय गोइंग द ट्रिप ऑन अलोन ऑन द ट्रिप. मैं अकेला जा रहा हूँ, नो अमाउंट ऑफ एक्सप्लेनेशन, कुछ भी उसको एक्सप्लेन नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. एंड शी हैजंट स्पोक टू मी सिंस माई रिटर्न फ्रॉम माई टूर, जब से मैं टूर से आया हूँ तब से उसने मुझसे बात नहीं करी है. मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू. आई वॉन्ट टू विन बैक हर, मैं वापस से उसका ट्रस्ट और फ्रेंडशिप पाना चाहता हूँ. डू राइट मी सून एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर एडवाइस कि मैं आप तुम्हारी एडवाइस के लिए फॉरवर्ड वेट कर रहा हूँ. गिव माई बेस्ट रिगार्ड टू अंकल एंड आंट विद लॉट्स ऑफ लव टू यू, योर्स लविंग सिस्टर, जिसका नाम क्या है, भूमि, राइट. यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी. देखिए आपने एड्रेस लिख दिया 101 मोती नगर, रामपुर रोड, इट्स इन मुरादाबाद, इट्स अ स्टेट इन यूपी, इट्स मुरादाबाद, right, it's in UP. Then you have to write the date, my dear Vashu, right. You will be glad to know that मेरा birthday जो है it falls on 6th of November every year, and my parents they are very eager to celebrate my birthday on a grand scale. All of my friends have been invited, सब लोग invite हुए to my party, to this occasion, and there will be a program of music. एक music का program भी होगा एक tea party के अलावा. Besides being in addition, so कुछ items होंगी recreation की, they have been arranged to entertain the guest, हम उनको एंटरटेन कर सके फंक्शन से. एंड यू आर वेरी कॉर्डली इन्वाइटेड, मीन्स यू आर प्यार से, कॉर्डली मीन्स फ्रेंडली, इन्वाइटेड टू टेक द पार्ट इन दिस सेलिब्रेशन. एंड आई होप यू विल श्योरली कम, यू विल सर्टेनली रीच ओवर देयर, राइट. थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, एंड ऑफ कोर्स इट्स Jane. Then you have to write a letter to your father asking for money for buying the books and of course paying school and hostel fees. Then you have to write the date, 401 New Taj Hostel, Stone Public School. Then it's Panipat, it's in Haryana. You have to write the date, my dear father, December 20. Again you have to this, I think this date won't be coming, right. I received the much awaited letter yesterday afternoon. मुझे बहुत ही ज़्यादा इंतजार था इस लेटर का. It brought me happy news, मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी की न्यूज़ मिली that you have arranged the engagement of डियर कोमल की अरेंजमेंट हो गई है. प्लीज एक्सटेंड माई कॉन्ग्रेचुलेशन, उसको मेरी मुबारकबाद उस तक पहुंचाना, टू हर एज हर वेल. डियर डैड, मेरे हाफ ईयरली एग्जाम जो है इट हैड बीन ओवर हो चुके हैं, बट आई होप फॉर द गुड रिजल्ट्स एंड फर्दर टीचिंग हैज बीन स्टार्टिंग, टीचिंग भी स्टार्ट हो गई है. एंड आई एम वर्किंग हार्ड
होल हार्टेडली मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, वो उस पर पढ़ाई कर रहा हूँ, एंड आई वॉन्ट टू बाय सम न्यू बुक्स, कुछ नई किताबें लेना चाहता हूँ, विच माई फ्रेंड्स हैव सजेस्टेड फॉर सिक्योरिंग दी बेटर मार्क्स। मोर ओवर जो विंटर्स हैं दे हैव सेट इन एंड आई हैव टू गो टू कॉलेज के टूर पे जाना है। कॉलेज और हॉस्टल की फीस जो है इट इज ऑल्सो टू बी डिपॉजिट, ये भी डिपॉजिट होनी है, बट देर इज नो बैंक बैलेंस विद मी, मेरा बैंक बैलेंस नहीं है। So please send me a bank draft of 8,000 rupees at earliest to meet my expense, मेरे खर्चा उठाने के लिए। एंड हेयर आई मिस यू, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ और मम्मी को। आई शैल कम टू यू ओनली ड्यूरिंग दी हॉलीडेज ऑफ होली फेस्टिवल की हॉलीडेज पे। विद रिगार्ड टू रिस्पेक्ट मम्मी एंड लव टू डियर अंकित एंड भारती, प्लीज डोंट बी लेट, प्लीज लेट मत करना इन ड्रॉपिंग मी अ रिप्लाई, मेरे को रिप्लाई करने के लिए। योर लविंग सन, इट्स राइट। Moving on to the formal letters, right? You have to write an application to the principal of your school to grant a leave on an account of your mother illness कि आपकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। The principal, ABC Public School, it's in Kanpur, sir, right? I'm sorry to inform you that my mother has been unwell. उनको fever हो रहा है, with fever since Sunday, right? And the doctor has advised her to take a rest for a week. एक हफ्ते के लिए रेस्ट लें। may add that she is alone at home, वो घर पे अकेली हैं। there is nobody, कोई नहीं है to look after her, so my presence at my home, मेरे घर पे जो मेरी presence है it's very necessary, she is too weak to manage herself, चीज़ों को खुद से manage कर ले, so I request you to please grant me leave for 5 days, right? Thanking you, yours obediently. You have to write the name of the student, then she is a student of class 8 and you have to put the date. You have to write an application to the principal for 5 days leave so that you can attend your brother's marriage. To the principal, right? And this is St. Paul Model School. It's in Bareilly. Again, it's in UP. Madam, with due respect, I beg to say that the marriage of my elder brother, it will be held. वो कब होने वाली है? On this coming Sunday. My father is quite alone. बहुत अकेले हैं, and I have to help him in making all the arrangements. सारे arrangement करने के लिए. Please kindly grant me leave for from 20th to 24th January and I'll be highly obliged to you, right? Yours obediently. You have to write the name, that is XXX, name कुछ भी हो सकता है, class 8B, and you have to put the date, right? Moving on to the exercise, you have to write the following letters and application and then you will be showing to your teacher. Please go through all these letters and do write it on your own. So that was all about formal and informal letter writing. Please go through this, learn all the formats and keep doing hard work. Stay blessed. Thank you.